students, we have started with your chapter number 6, anatomy of flowering plant. Dear student, what is anatomy? Anatomy का मतलब होता है study of internal structure. Specifically, if you are talking about plant anatomy, we will seeing histology. What is histology? It's a science that deals with study of structure and organization of tissues. Okay, tissue आपको अच्छे से पता है. If I want to say, please define tissue. So what answer comes in your mind? Group of similar cell. Yes or no? Yes. Dear students, we have classified tissues into two categories in your last video. Simple tissue and complex tissue. Simple tissue का मतलब होता है it consists of only one type of cell, whereas complex tissue consists of more than two types of cell. Am I clear? Okay. Dear students, आसान भाषा में if I want to say, then complex tissue में होता है division of labor. Division of labor. Am I clear? Which performs the same function, right? Then we have also discussed, I have given a brief idea regarding your meristematic tissue and your permanent tissue, right? So dear students, in this video we will be focusing on meristematic tissue. Am I clear? So here I am writing the definition of your meristematic tissue. ये है क्या? So meristematic tissue is nothing but your ये simple tissue है. It's your simple tissue, right? Which consists of course similar cells. Yes or no? Similar cells and ये जो cells होते हैं बच्चों वो कैसे होते हैं? Immature cell, or I can say it as an undifferentiated cell. Am I clear? So immature cell, or you can say it as your, yes, इसको क्या बोला जाता है? Meristematic cells. It consists of your meristematic cells. Am I clear? Which have property of cell division. जिसके पास कौन सी property है? Property of cell division, right? This results in formation of new cell. आपको अच्छे से पता है. Okay. So once again, what I mean by your meristematic tissue, it's a group of similar cell, immature cell who is having property of cell division, which results in formation of new cell. ये cell divide होते हैं जिस वजह से due to this reason there will be formation of new cells. Dear students, cell division, mitosis, meiosis क्या है? You people have understood very well. ठीक है? Okay. So this is what I mean by your meristematic tissue. Okay. Now if I want to say some of the characteristic of meristematic cell, some of the characteristic, what I am writing, some of your characteristic of your meristematic cell. So here I would say that they are having of course ability to grow and divide. Number one, what they are having? Ability, right, to grow and divide. Am I clear? This is the most important characteristic feature of meristematic cell. ये grow कर सकते हैं, divide कर सकते हैं. Am I clear? Let's talk about second property. They are small. छोटे होते हैं. They are small, immature cell. Like I told in definition, छोटे छोटे immature cells होते हैं. If I am talking about their shape, then it may be oval, है ना? It may be round, it may be polygonal, okay, or it may be isodiametric, or cells which have same diameter. Am I clear? So these are the shape: oval, it can be round, it can be polygonal, it can be isodiametric and many more. Am I clear? तो ये हमने shape के बारे में पढ़ा. Next, if we are talking about your nucleus, right? Then nucleus is visible. That is your cospicus. Nucleus, cospicus. इनमें जो cytoplasm होता है, cytoplasm is dense. Am I clear? Okay. Then if I am talking about cell wall,
सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट्स, उनके पास होती है सेल वॉल, राइट? तो सेल वॉल इज इलास्टिक, ओके, एंड थिन, एंड इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से बनी होती है. एम आई क्लियर? देन सेवेंथ कैरेक्टरिस्टिक फीचर इफ आई वांट टू से, देन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इट इज स्मॉल. इट इज स्मॉल. Mitochondria, if I am talking about your mitochondria, then this have simple structure. Mitochondria का structure कैसा होता है? Simple होता है. Okay. Then if I am talking about crystals, right? Then these crystals are absent in case of your meristematic cell. Am I clear? Yes. Then the rate of respiration. क्या बोला मैंने आपको? The rate of respiration is high. Rate of respiration is high. So dear students, these are the some of your characteristic feature of your meristematic cell. Once again, they have ability to grow and divide, right? छोटे cells होते हैं, immature cells होते हैं. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सेल, तो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़े. सबसे पहले सेल वॉल कैसी बोली मैंने? थिन. सेल वॉल इज थिन, इज इलास्टिक, एंड इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. सिंपल सी बात है, राइट? चलो, सेल वॉल खत्म. उसके अंदर क्या आया? साइटोप्लाज्म. कैसा होता है? डेंस. फिर क्या आया? ब्रेन ऑफ सेल, दैट इज न्यूक्लियस. न्यूक्लियस इज कॉन्स्पिकस. कॉन्स्पिकस का मतलब होता है इट इज विजिबल. ओके. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यू पीपल हैव अंडरस्टूड, राइट? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, rough endoplasmic reticulum, eukaryotic cells, right, have membrane bound organelle, and this is one of your membrane bound organelle, right? Correct? Okay. So जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो स्मॉल होता है, छोटा होता है. माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, एंड the rate of respiration in these cells is very high, and it is mainly involved in synthetic activity. So what I am writing over here, there is synthetic activity. Synthetic activity in the sense क्या? कुछ ना कुछ बनता रहेगा, कुछ ना कुछ बनता रहेगा. Am I clear? So dear students, these are the characteristic feature of your meristematic cell. ठीक है? I hope आपको ये समझ में आया. So we people have done your characteristic. Now let's understand the types of your meristematic tissue. Okay? So this will be your next heading. Okay? Types of meristematic tissue depending on origin. Depending on origin. Am I clear? Okay. So here, if I am talking about your meristematic tissue, then depending on origin, they can be classified into two categories. They can be classified into two categories. Number one, I am writing it as your primary meristem. What I am writing? Primary meristem. Am I clear? And second one, I am writing ये primary है, तो दूसरा क्या होगा? You people are very clever. Yes, it is your secondary meristem. Am I clear? Okay. So once again, your meristematic tissue on the basis of origin can be classified into two categories: primary meristem and secondary meristem. Now let's understand what is the difference between two. If I am talking about your primary meristem, right, then such type of meristem is developed directly from, it is developed directly from meristem of embryo. Developed from meristem of embryo. Am I clear? Embryo in the sense I am talking about seed. Seed के अंदर embryo मैंने आपको पढ़ाया था morphology में. It is having
Yes, plumule, epicotyle, hypocotyle, radicle, yes or no, ये embryo है which gives rise to your shoot system and root system. Am I clear? So dear students, if I am talking about your primary meristem, if I am talking about primary meristem, then such type of dividing cells are developed from meristem of embryo. Am I clear, dear students? ये जो primary meristem है, okay, it appears early in life. It appears early in life. Am I clear? Whereas if I am talking about secondary meristem, then this appears, ये early है तो ये कैसा होगा, late in life. Am I clear? Okay, if I am talking about your primary meristem, then this is responsible for lengthwise growth. Plants, if you have seen it grow, उनकी height, उनकी length increase होती है. Yes or no? Yes, and that is due to primary meristem. Am I clear? So simply what I am writing over here, it is responsible for lengthwise growth. Length is equal to height, उसकी height increase होती है. Am I clear? And if I am talking about your secondary meristem, then this is responsible for girth wise growth. It is responsible for, sorry, girth wise growth. Girth wise growth मतलब क्या? Diameter जो increase होता है. Yes or no? Yes. ये जो diameter increase होता है, it increases after some point. Yes or no? ऐसा नहीं है कि seedling emerge हुआ seed से and diameter increase होना शुरू हो. ऐसा कभी देखा है आपने plants में? No. First plant increases in length, followed by which उसकी girth, उसका diameter increase होता है. I think you people have seen this. Yes or no? Yes. So ये जो girth wise growth है, this girth wise growth is due to secondary meristem, and this girth wise growth is called as your secondary growth. What it is said? It is said as your secondary growth. Am I clear? Okay. So dear students, come back to this point. Primary meristem and secondary meristem, lengthwise and girthwise. Height increase करे, मोटाई increase करे, simple as that, which increases diameter. Am I clear? Okay. Now let's understand the types of primary meristem. If I am talking about your primary meristem, once again, depending on location, they can be of two type. They can be of two type. Number one is your, what I am writing, apical meristem. What I am writing, apical meristem. And second one, which I am writing here, is your intercalary meristem. I am going with this side, right? Because in this I don't have to write much. So this is your intercalary meristem. Are you people getting my point? Number one is your apical meristem, as I have written over here, right? And number two is your intercalary meristem. Dear students, these are the type of your primary meristem. ठीक है? As the name suggests, apical. Apical, इसका मतलब क्या होता है? टिप. तो ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है वो कहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए? टिप पे. अब टिप मानी क्या? ऑफ whom I am talking about? I am talking about tip of root. I am talking about tip of shoot. Yes, very good. Am I clear? So this apical meristems are present at tip, or you can say it as apex of root, right? Dear students, we people have understood regions of root. हमने पढ़े थे ना, उसमें सबसे नीचे वो टिप है. रूट की क्या है? टिप है. कौन सा जोन था? जोन ऑफ मेरिस्टेम. Yes, very good. So it is present at tip or apex of your root, right, of shoot
and of course its branches, rather I should say its branches. Am I clear? Yes or no? This is what I mean by apical meristem. आई बात समझ? मैंने आपको क्या बोला? देखो यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके समझाऊं. चलो, say for example, just a minute, if I am talking about your shoot, मान लीजिए ये shoot है, ये सॉइल है एंड ये क्या है, रूट है. तो रूट की टिप ये है. सो यहाँ पे जो प्रेजेंट है, दिस इज व्हाट आई मीन बाय अपिकल मेरिस्टेम, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लेंथ वाइज ग्रोथ. यस और नो? ओके, अब ये इसकी ब्रांच हुई है ना. तो यहाँ पे जो प्रेजेंट होता है, दिस इज व्हाट, ये जो है ये वो भी क्या है, अपिकल मेरिस्टेम, जो टिप पे प्रेजेंट होता है. इन जनरल इट कैन बी शूट, root as well as their branches, Am I clear? So dear students, I hope ये आपको समझ में आया, right? So this is your root and उसकी जो टिप है वहां पे प्रेजेंट होता है क्या? Yes, क्या प्रेजेंट होता है? अपिकल मेरिस्टेम. Okay dear students, this is your shoot. देखो ये छोटी है, listen very carefully. यहाँ पे ये क्या है डियर स्टूडेंट्स? अपिकल मेरिस्टेम, जो एपेक्स पे है, जो टिप पे होता है. नाउ व्हाट हैपन हियर, सेल्स आर कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग. कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग का मतलब न्यू सेल्स आर कंटिन्यूअसली बीइंग एडेड. अगर नए नए सेल्स ऐड होते चले जा रहे हैं तो लेंथ जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगी. यस और नो? से फॉर एग्जाम्पल यू आर हैविंग 1 रुपी कॉइन, यू आर हैविंग 1 रुपी कॉइन, 10 है आपके पास, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखो. तो व्हाट हैपेंस, उसकी जो हाइट है वो क्या होती चली जाएगी, इंक्रीज. द लेंथ इज गोइंग टू इंक्रीज. नाउ एड 10 मोर, 1 by 1 एड 10 मोर, व्हाट विल हैपन? सो यू कैन कंपेयर. 1 rupee coin is equal to 1 cell, another coin is equal to 1 cell, another coin is equal to 1 cell. Are you people getting my point? This is how the height, the length of plant is going to increase. But the point here I want to say is that when the length increases, तो यहाँ पे जो कुछ cells होते हैं, shoot एपेक्स के जो कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं, इट लीव्स बिहाइंड. ये छूटे, थोड़े सेल छूटे. किसके छूटे? शूट मेरिस्टेम के. वापस से ये इंक्रीज हुआ, कुछ सेल छूटे, राइट? ये आर यू पीपल गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज कॉल्ड एज, ये जो है बच्चों, उसको क्या कहा जाता है? एक्सिलरी बड, which is present at the axil of leaf, Am I clear? And this may gives rise to, right? यहाँ से क्या निकलती है? Either branch or there will be formation of flower. Are you people getting my point? And ये जो टिप पे बर्ड है, ये बर्ड को कहा जाता है apical bird. What it is said? It is said as your apical bird. Here once again I am explaining very quickly. ये है shoot, right? ये उसका apical bird. Here it adds new cell, right? Leave behind some cell at the axil of leaf. ये leaf है. Let's draw with the green color one. Just a minute. तो ये leaf है, right? तो लीफ की एक्सिल का मतलब होता है एंगल. यहाँ पे कुछ सेल उसने छोड़े, ये ग्रो कर गया. वापस से कुछ सेल उसने छोड़े, ये ग्रो कर गया, राइट? सो द सेल्स विच आर लेफ्ट बिहाइंड वो मेरिस्टेमेटिक ही होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली किसने छोड़े हैं, किसने लेफ्ट बिहाइंड करे हैं? इज योर अपिकल मेरिस्टेम ओनली, राइट? सो ये जो है दिस इज योर एक्सिलरी बर्ड. ये क्या है? एक्सिलरी बर्ड, और यू कैन से इट एज अ लेटरल बर्ड. व्हाई इट इज सेड एज अ लेटरल बर्ड? क्योंकि इट गिव्स राइज टू लेटरल ब्रांचेस. साइड, लेटरल का मतलब क्या होता है? साइड. ओके, सो एक्सिलरी बर्ड, और यू कैन से इट एज अ लेटरल बर्ड which gives rise to what? Branch
और इट में फॉर्म्स फ्लावर, ठीक है। एंड ये जो टिप पे प्रेजेंट होता है वो क्या है, एपाइकल बर्ड। व्हाट इज दैट, दैट इज योर एपाइकल बर्ड। सिंपल सी बात है, ठीक है, ये समझ में आया। तो ये हो गया आपका अपाइकल मेरिस्टेम। दो चीजें आपको याद रखनी है, अपाइकल बर्ड एंड एक्सिलरी बर्ड, दिस टुगेदर राइट फॉर्म्स योर प्राइमरी मेरिस्टेम। अब बात करें इंटरकैलरी मेरिस्टेम के बारे में, देन सच टाइप ऑफ मेरिस्टेम, सिंपल, such type of meristem is present between permanent tissue। मान लीजिए सॉरी जस्ट अ मिनट, ये मान लीजिए दिस इज योर परमानेंट टिश्यू, दिस इज योर परमानेंट टिश्यू। तो इन बिटवीन जो यहाँ पे प्रेजेंट होगा वो क्या होगा आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम। एम आई क्लियर, ओके। जनरली ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है इट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीव्स, either above or below nodes। एम आई क्लियर, नोड्स के ऊपर या नोड्स के नीचे इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है एंड इट इज प्रेजेंट बिटवीन परमानेंट टिश्यूज। एम आई क्लियर, ओके। नाउ दिस प्लेस एंड से फॉर एग्जांपल इट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ ग्रास, it is present in case of grass and here what it functions, it regenerates। regenerate का मतलब क्या होता है, वापस फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है, it regenerates the plant parts consumed by, घास को कौन खाए, consumed by grazing animals। Are you getting my point? चलो से फॉर एग्जाम्पल काउ ने ये ऊपर से ग्रास खा लिया, यस और नो। तो यहाँ पे ये क्या है, मेरिस्टेम है। What is this? This is your मेरिस्टेम, राइट। तो ये मेरिस्टेम डिवाइड होके it regenerates the part which is eaten up by this grazing herbivores। Are you people getting my point? आपको अच्छे से समझ में आया, yes or no? So इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बिटवीन परमानेंट टिश्यू। एग्जाम्पल ग्रास याद रखो, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन केस ऑफ मिंट, पुदीना, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन केस ऑफ मिंट। लिखो वन मोर एग्जाम्पल, mint and grass, right? And what is its main function? To regenerate the part which is lost by grazing animals। Am I clear? Okay, but most probably ये जो intercalary meristem है is used up by permanent tissues, वो use हो जाता है by permanent tissues। Am I clear? तो dear students, ये क्या पढ़ लिया हमने, primary meristem। Now let's talk about secondary meristem। It is responsible for girth-wise growth। It is responsible for girth-wise growth। Appears late in life। तब तक तो सेल कैसे होंगे, differentiated, yes or no? Now they do not have property of cell division, yes or no? But during some time at certain point of life of plants, ये जो differentiated cells है who do not have property of cell division, they undergo a phenomena called as, कौन सा सिखाया था मैंने आपको पहले वीडियो में, differentiation, yes or no? Yes, differentiation मतलब once again they gains property of cell division which results in formation of कैसे cell, differentiated cell who is having property of cell division and they are responsible, once again they are responsible in forming tissues, but these tissues are called as secondary tissue। इसको क्या कहते हैं बच्चों हम, it is called as your secondary tissue। Am I clear? Why it is said as secondary tissue? Since this is developed late in the life of plant and it is developed from differentiated cell।
टिश्यू ही है ये। टिश्यू के सेल्स डिफरेंशिएटेड इन द सेंस दे डू नॉट हैव प्रॉपर्टी ऑफ सेल डिवीजन, वापस से प्रॉपर्टी गेन करी। This results in formation of secondary tissue and this is what I mean by secondary growth. इसको क्या कहते हैं बच्चों? Secondary growth. Am I clear? Some examples if I want to write over here is your interfascicular cambium. Then one more is your cork cambium. Am I clear? Interfascicular cambium, we are having your cork cambium. Okay, these are the examples of secondary growth. Example of secondary growth which is due to appearance of secondary meristem. ठीक है, अभी दिमाग की बत्ती मत जलाना, right? What is this? We are going to understand in the same chapter. For this video, आप ये सिर्फ नेम याद रखो, ये चीज है क्या, that we are going to understand in secondary growth. ये जो टॉपिक है ना, वो बहुत मस्त टॉपिक है, one of the favorite portion of this chapter. Am I clear? तो यहाँ पे ये दोनों चीज मेंशन होगी ही. ओके, तो अभी के लिए फॉर सेकेंडरी ग्रोथ ये एग्जाम्पल याद रख लीजिए. एम आई क्लियर? सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज योर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. ओके, प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम. प्राइमरी मेरिस्टेम में दो, अपाइकल एंड इंटरकैलरी. सेकेंडरी मेरिस्टेम लीड्स टू सेकेंडरी ग्रोथ. एग्जाम्पल इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्ड कैम्बियम. I hope you understood this video really very well, right? Thank you. See you soon.